Assalamu alaikum. Today we are here going to cover another chapter for AS, and the chapter is chapter number 3, in which where the first content is memory and data storage. Just give me a 1 minute. Let me settle the pointer. All right. So, in this section, we are going to cover up the content that would be related about memory and storage. Memory versus storage as well. What does it mean by primary memory? What is the structure of primary memory? What are the characteristics of RAM? The further we have types of RAM as well, DRAM, SRAM. Secondly, we have versus of the DRAM and SRAM. We will cover up another primary memory, that would be ROM. Then we will having a differences, or you can say the verses, RAM and ROM, and then PROM, EPROM, and double EPROM. Secondary storage, removable devices. Then we have embedded systems, pros and cons of embedded systems, and at the end we will conclude the summary. When we talk about what is memory and storage, when we talk about memory, it is the internal workspace for the temporary, or you can say the essential data. Whatever the computing device you have, you all need to store the data. That could be temporary, that could be permanent. All right. And what does it mean by the storage? Storage are basically used to the store the files for the long time, or you can say the permanent data as well, in which you can store the pictures, you can store files, you can store the applications. So this is the kind of storage. When we talk about the storage capacity should be greater than the memory, or memory should be greater than the storage, it's a very clear that your storage must be larger than the internal memory that will be used to hold large number of files. That could be music files, that could be photos, that could be videos, and that could be documents, and that could be applications and executable files, all that. Your removable storage devices basically allows the transfer of data between the devices. When we talk about the removable storage devices, you have a USB, you have HDD, internal, sorry, external HDD, that would be used as a removable storage devices. Modern alternatives storage devices are the Bluetooth, data drop, or the cloud storage. These are the modern alternatives of the data transfer. एग्ज़ाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपके पास क्या आ जाती हैं मेमोरी में, आपके पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होगी आपके पास रैम. एंड रैम आर यूज टू स्टोर the executions of the program, or you can say the current running instructions of the program. Let's suppose you are playing a game, you are watching something else, so that needs basically storage, and that would take from the RAM, or you can say the memory. Well, when it is about to save that video in your phone, or you can say in a laptop, that will be stored in the permanent file, that will be secondary storage, and then can be SSD or HDD. Hope so it will be clear. Now let's have comparisons where memory with storage. Memory, it is basically used for the temporary workspace, and the storage would be used for the permanent data storage. Memory is a volatile, all the content will be removed as you just turn off your system, turn off your mobile, turn off your laptop. Storage is the non-volatile. Memory, it is directly accessible by the CPU, so that's why it is very fast. Storage, secondary storage devices, you cannot access the HDD or SSD directly by the CPU, so it is a slower. Memory, example है आपके पास RAM, ROM and cache, all that. In storage, you basically ROM is used for the files that could be for the permanent, so that's why we are not going to cover. It's a part of primary memory, or you can say main memory, but right now we're talking about the instruction that could be run in the memory, that would be a RAM. Now we have storage में आपके पास है SSD, HDD and USB drives as well. Moving to the next, the first thing is primary memory. As I told you, the point is this, that it is the memory which is directly accessible by the CPU. And there are two types of the primary memory. The number one is RAM, that stands for random access memory. Number two, ROM, which is read only memory. So
RAM, or you can say the primary memory, or you can the main memory, it basically enables the processor to temporarily store the instructions and data. Let's suppose we have a example when you are opening an MS Word in your phone or you can say laptop. Firstly, it will load from the storage device storage, where that would be SSD, and then it will be transferred from SSD to the RAM for the quicker access. And unless until it is not opening, it is in your storage device, or you can the secondary storage device, and as you start working on that application, that is taking a space from your memory, and that's RAM. Structure of primary memory, we are basically having a two types of RAM. Number one is dynamic RAM and number two is static RAM. D stands for dynamic, or you can say DRAM, and number two SRAM, which stands for static. Further, we have other types of ROM as well: PROM, EPROM, and double EPROM. So, diagram is an optional. It would not be asked in A levels that you just draw the diagram. It is just giving the structure of the primary memory, or you can say the main memory, where we have RAM, we have ROM, we have DRAM, we have SRAM, we have PROM, double EPROM, and triple EPROM as well. रैम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि रैम बेसिकली आपके पास यूज़ किया जाता है जस्ट टू रीड द डेटा, और यू कैन से रिटर्न कंसर्न एज वेल। और जितनी भी आपकी करंटली एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं या डाटा हैं, वो आपकी सारी की सारी रैम के अंदर स्टोर होंगी, और ये ओएस का पार्ट भी स्टोर करता है, ऐप्स को भी स्टोर करता है, और करंटली यूज होने वाली इंस्ट्रक्शंस को भी अपने पास स्टोर करेगा। पॉइंट नंबर 3 है कि रैम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, चूँकि वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती हैं, सो दैट्स वाई रैम जो है वो आपके पास वॉलेटाइल होता है, आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा जैसे ही आप इसको पावर ऑफ करेंगे। पॉइंट नंबर 4 ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द रैम साइज, इफ़ इट इज़ 2 GB, all right, but later you think, no, I need a 4 GB RAM, so it will also increase the performance of your system. So RAM basically allows to having a very smooth multitasking, and in that sense that you can watch the videos, you can listen the audios, you can work parallelly with the document, you can open the pictures as well, so you can work with the high memory softwares as well, that's like a Visual Studio and all that. So having a more RAM size, it will increase, or you can say the improve the performance as well. All right, we have a first type of RAM, which is DRAM. Important thing is this, it will be asked for the comparisons, write down the any two comparisons, DRAM and SRAM. DRAM में हमेशा याद रखें आपके पास ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं, एंड जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो और जो कैपेसिटर्स हैं ये आपकी बिट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स विल बी यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज़, एंड कैपेसिटर्स विल बी यूज्ड टू स्टोर जस्ट टू store the flow of the current in the circuit as well. एंड जो आपके पास डी रैम होती है, इसको कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती है रीफ्रेश करने की, और ये चीपर होती है, हायर कैपेसिटी होती है, बट इट कंज्यूम्स लेस पावर एज वेल। एंड कॉमनली ये आपके पास कंप्यूटर्स में मेन मेमोरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और जो आपके पास लैपटॉप आते हैं मोस्टली राइट नाउ, दे हैविंग DD4 एंड DDR5 बेसिकली डी रैम इन द मेन memory system. If you are going, if you are interested to open up your laptop, so you can see the RAM as well, and it will be written on that kind of paper that will be fixed on that RAM के आपके पास ये DDR4 है या DDR5 है। तो ए लेवल्स में जो पेपर का सनैरियो है वो कुछ ये होगा कि आपसे वो रैम के बारे में पूछेगा, देन कैटेगराइज करने का बोलेगा कि डी रैम क्या है, या उसके बाद आप एस रैम को, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जो हैं वो आपके पास डी रैम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। Next we have static RAM, or you can say the SRAM.
एस रैम के अंदर आपने अपनी डाटा यानी बिट्स को अगर स्टोर करवाना है तो आप फ्लिप फ्लॉप का सर्किट यूज़ करेंगे, एंड देर इज़ नो नीड टू रिफ्रेश एस रैम अगेन एंड अगेन. इट इज़ बेसिकली फास्टर एज compared to the DRAM, and it will be used in the CPU just like a cache memory, and is more expensive and having a lower capacity as well. And when you see some kind of processors like let's suppose Intel i7 processors, so it use SRAM that could be L1, L2, L3 caches. So it is just a further, or you can say the extra information over there. But regarding A levels point of view, you just need to memorize the differences that in DRAM transistors, the capacitors will be used, it is cheaper, and in SRAM the flip-flop circuit will be used, and it doesn't need to be refreshed again and again, and it is basically expensive, and it having a low capacity as well. Here we have once again the comparison. In SRAM, in DRAM, capacitors and transistors will be used, and SRAM flip-flop technology will be used. DRAM basically needs to be refreshed the again and again, and SRAM does not needs to be refreshed again and again. DRAM is basically slower, and SRAM is faster. DRAM is cheaper, SRAM is expensive. DRAM is how is used in main memory, and SRAM is basically used in a cache memory. Let's we have another type of main memory, you can say the primary memory, which was ROM. ROM is basically stands for read only memory, and it is used to store the data or instructions permanently, or you can say for the long time. And once you have write down the instruction in the ROM, it cannot be changed easily, and you can say it cannot be altered. It ये आपके पास नॉन volatile है, because whatever you are going to save in this kind of memory, it will not be changed, or you can say it will not be raised if you are going to turn off your device or data sorry computer as well. So it stores the critical instructions, जैसे आपकी BIOS instructions होती हैं, ठीक है, basic input output system, और you can say the firmware instructions, ये सारी की सारी आपके पास ROM के अंदर स्टोर होंगी. जैसे एग्जांपल में कहते हैं, जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो जो बायोस जो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ होता है वो आपका रोम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द कंपैरिजंस. आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी बताएं कि आपके पास रैम और रोम के कंपैरिजंस क्या है, क्या डिफरेंसेस है रैम और रोम के. सो वी नो अबाउट इट. रैम आपके पास टेम्परेरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, रोम विल स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर द लॉन्ग टाइम, इज अ परमानेंट. रैम इज अ volatile, रोम इज नॉट on volatile, it's non volatile. RAM, it is rewritable, it is going to be rewrite the instructions again and again, because when you turn off the systems all the instructions will be removed, and the next time whatever the application you are going to be used, it will be occupied for that instruction. ROM, it is not rewritable. Once you have write down the instruction, you cannot alter the changings. RAM is used to store the running programs, and ROM is basically used to the boot up instructions. Now we have a comparisons of these three types of ROM, which number one PROM, number two EPROM, and number three double EPROM. PROM, once you have write down the instructions, you can use it using a fuzzes, and it will use the RFID tags that will be used in older mobile devices. EPROM, it will use UV light, ultraviolet light, and it is a reprogrammable, and ये आपके पास prototyping में use किया जाता है. If you have write on the instruction, you can change it again, and you can write down again once a new instruction. Double EPROM, it's a electrically erasable program, and it is basically used in firmware updates. Now we have another secondary storage devices. Secondary storage devices, as I told you, it will be used for the long term data. एग्जाम्पल्स में इसके पास आपके पास आ जाती है SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव. आपके पास HDD इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है. SSD आपके पास जो है वो इंटरनल होती है. HDD अगर आपके पास एक्सटर्नल है तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये पोर्टेबल डिवाइस है, यू कैन कैरी आउट विद योर सेल्फ. एग्जाम्पल्स अगर आपके पास अगर आप देखें HDD के साथ, तो आप देखेंगे DVD है, ब्लू रे है, फ्लैश ड्राइव्स है. और एग्जाम्पल ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू सेव सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, सो यू कैन ऑन अ USB स्कूल सबमिशन, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ portable device. So it is a secondary storage device, and it is not directly accessible by the CPU. Now we have another topic which is called embedded systems.
Embedded systems that are basically used to perform a specific, or you can say the dedicated task. एंड एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं और वो आपकी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेके, एक कुकर टेम्परेचर होता है, उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन कर दी जाती है। रेफ्रिजरेटर होता है, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन कर दी जाती हैं। या स्मार्ट थर्मोस्टेट होता है, दैट वुड कैन बी यूज फॉर यूजिंग योर स्मार्टफोन एज वेल। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास प्रोज एंड कॉन्स क्या है एम्बेडेड सिस्टम्स के। ए लेवल्स में एम्बेडेड सिस्टम्स के हमेशा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द सिनेरियो बेस्ड पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड वी विल क्लियर द ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉज आपके पास ये है कि ऑब्वियसली जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। बट इसका कौन ये होता है कि इनको अपग्रेड करना जो होता है मुश्किल होता है, बिकॉज इफ़ यू हैव राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस वन, सो इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज। अब आपकी ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और यू कैन से डिफ़िकल्टी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। फास्ट रिस्पॉन्स होता है उनका, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैक इफ़ यू लॉस्ट योर डिवाइस। प्रॉज ये हैं कि रिलायबल हैं, बट इसका कौन ये है कि इफ़ इट्स वंस योर डिवाइस इज़ डैमेज, सो इट इज़ नॉट रिपेयरेबल, you cannot, you have to change the device as well, so device is often discarded rather than be repaired। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, जो आपकी स्मार्ट वॉशिंग मशीन होती है ये डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट करती है और एफिशिएंटली ऑपरेट करती है, because it is having a one cycles and two cycles as well। So it is also having the concept of RAM and ROM. ROM basically it is having the instruction that it will play the cycle like for one time or two time। so जब तक आप उसको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड का अपने साइकिल का टाइम देते हैं, कितने टाइम तक ये मशीन चलेगी, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी कहाँ पे स्टोर हो रही है, रैम के अंदर। सो इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रैम और रोम के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, एंड वी विल डिस्कस इट later in the next video as well। so summary is this, that we cover up the memory। it is a temporary, fast, volatile, and that types of memory are RAM and ROM। स्टोरेज में आपके पास परमानेंट होती है, स्लोर होती है, लार्जर होती है, एंड इसकी टाइप्स हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है। सो एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली इन्हेंस करते हैं ऑटोमेशन, बट रेस इट इज़ हैविंग अ वेरी सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड मेंटेनेंस इशूज एज वेल। Hope so you get that। in case of any query or in case of any question, you can comment and I'll let you know the answer as well, but don't forget to subscribe the channel and just be in contact with that। we will cover up each and every past paper question in the upcoming video। thank you so much।